Good morning class. This video is for class 8 students, chemistry subject, chapter number 3, elements, compounds and mixtures. This is the third video of this chapter. In this we will be studying these activities which are based on the technique of filtration and evaporation, which we have already discussed in the previous video. So the first activity is aim of the activity. Now what is the aim of the activity? The aim is to separate calcium carbonate powder mixed with common salt. What is common salt? Common salt is sodium chloride, and this is done by the filtration process. So what are the materials which are required for this activity? First you need beakers, a piece of filter paper, a funnel, a glass rod, a funnel stand, a mixture of calcium carbonate powder and common salt. So these are all the components, all the substances or compounds which are needed in the experiment. So what is the procedure? First step is take the mixture in a beaker and add water to prepare a solution. So first you have to prepare the solution, that is solution of calcium carbonate powder mixed with common salt. Okay, then take a circular piece of filter paper and fold it in half and then into a quarter, then open it out in the form of a cone and fit it inside the glass funnel. Now with a filter paper you have to make a cone, and how it is made? First the circular piece, suppose this is a filter paper, a circular filter paper, first it is folded like this, half in the midway, so you get like this will be obtained. Now what you have to do, you have to fold it again from here. Now you will get this portion. Okay, अब ये चार ऐसे बन जाएंगे. Now you have to open this and form a cone like structure. Now this cone is fitted inside the glass funnel. The next step is you can put a few drops of water on the filter paper cone to fit it properly. Now you have to put few drops of water on this to fit this filter paper on this funnel. The next step is fix the funnel in a funnel stand and place a beaker below the funnel. Now it is fixed on a funnel stand and kept just above the beaker. The next step is now stir the mixture and pour it closely along a glass rod into the filter paper cone. You can see in this diagram, this is the beaker with the common salt solution. This is your filter cone and this is your stand. So the cone is fixed, the funnel is fixed in this, and this is your filter paper cone, and this is your mixture which needs to be separated, that is the mixture of calcium carbonate and water. So what is done? This is poured through through the glass rod you mix it. So this mixture is poured in this beaker. Now what are the observations that you can observe? The common salt dissolved in water passes through the filter paper and collects in the beaker as filtrate. What happens? The common salt जो वाटर में डिज़ोल्व हो गया है वो पास करेगा फिल्टर पेपर के थ्रू और बीकर में कलेक्ट हो जाएगा एज फिल्ट्रेट. ओके, सो दिस वाज द मिक्सचर. ठीक है, अब यहाँ से जब ये पास करेगा तो यहाँ पे फिल्ट्रेट के फॉर्म में कॉमन सॉल्ट कलेक्ट हो जाएगा एंड द कैल्शियम कार्बोनेट इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर एज द रेसिड्यू. नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस कैल्शियम कार्बोनेट? इट विल बी लेफ्ट ऑन दिस filter paper cone. So what are the conclusion? That calcium carbonate is insoluble in water and we can separate it by the process of filtration. Okay, so the next activity is for evaporation process. Now how can you demonstrate the evaporation process? So what is the aim of this activity? It is to obtain the common salt, that is the sodium chloride, that is dissolved in water by evaporation. What happens? What are the materials that are required for this activity? An evaporating dish. You see, this is the evaporating dish, this bowl like structure. Then the filtrate containing salt obtained from activity 1. Here you got filtrate. This is the filtrate for filtrate of common salt. You need this also, a Bunsen burner
that is a burner, a tripod stand, a wire gauge. You see this is a wire gauge. ये एक wire gauge है, ये wired होता है, ये हम रखते हैं ताकि डायरेक्ट हीट ना हो. इसके ऊपर हम, नीचे बर्नर है, ये स्टैंड है ट्राईपॉड स्टैंड, इसके ऊपर वायर गॉज रखते हैं और नीचे से बर्नर जब जलाते हैं तो हीट यहाँ पास होती है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दिस? Take the filtrate containing common salt in an evaporating dish. Now heat the filtrate. You take this filtrate containing common salt from this experiment and keep it in a dish. Okay, keep it in evaporating dish. This white is the evaporating dish. You keep it in this, and then what happens? You heat it. What will be observed? As the solution is heated, water gets evaporated from the dish. Okay, what happens? Water evaporates. Let the water evaporate completely. You will see white solid particles left behind the dish. When all the water will be evaporated, only white solid particles will be left behind in the dish. You will find out that this is nothing but the salt. So that white particle that is left behind in the dish is salt. So what conclusion can be obtained? That we can separate common salt dissolved in water by evaporation. So the common salt from the water can be obtained through the process of evaporation. Now what is the next method that is mentioned in your book? Is the crystallization technique. Crystallization is the process of separating a pure solid in the form of its crystal from its solution. So it is the process to separate the solid in its pure form. Okay, किसी भी सॉलिड को उसके प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना और उसके क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन करना उसके सॉल्यूशन से, दैट इज़ द प्रोसेस नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. So now what is the principle behind this crystallization process? Principle is the pure crystals of a solid separate out on cooling its hot saturated solution. So whenever a solid in its hot saturated solution is cooled down, then it forms its pure crystals in the form of solid and it is thus separated out. So what is the technique of crystallization? The solution is heated and more solid is added to the solution till it becomes saturated. What is done? सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है सॉलिड का, उसको हीट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड जो है वो ऐड करते हैं सॉल्यूशन में टिल इट बिकम्स सैचुरेटेड. एक सैचुरेशन लेवल तक उसको हम हीट करते हैं. Then it is cooled to obtain the pure crystals of the solid. Now again this is again cooled so that we can obtain the pure crystal of the solid. After that the crystals are separated by filtration and dried. Then what is done? अब ये कूलिंग जब हो जाएगी तो प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगे. अब इस प्योर क्रिस्टल को हम सेपरेट आउट कर देंगे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से. फिल्टर करेंगे और उसको ड्राई कर लेंगे. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट. क्योंकि सी वाटर में काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कॉमन सॉल्ट में आ सकती है. कॉमन सॉल्ट हमने इवेपोरेशन के थ्रू ऑब्टेन किया था पर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं. ना उस इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए और कॉमन सॉल्ट को प्योरीफाई करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. इम्प्योर सैम्पल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड एलम आर ऑल्सो प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन. द नेक्स्ट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन. Distillation is the process of separation of a liquid from its solution with a solid constituent by heating the liquid to its vapor form and then cooling the vapor to get back the pure liquid. What is distillation? It is the process of separation of liquid from its solution. Liquid को उसके solution से separate out करने के लिए distillation process का use करते हैं. Solid और liquid के mixture के separation की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो जब solid और liquid का solution बन जाता है तब हमें liquid को separate करने के लिए we use distillation process. And how it is used? By heating the liquid to its vapor form. जब तक लिक्विड अपने वेपर फॉर्म में ना चेंज हो जाए तब तक उसको हम हीट करते हैं और फिर उसको हम कूल करते हैं ताकि वो वेपर वापस से उसके प्योर लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सके. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड डिस्टिलेशन?
This method is used to recover both dissolved solid and the liquid form from the mixture. So this is the method which is used to recover both जो solid dissolve हो गया है वो भी और जो liquid है जो mixture में present है उन दोनों को हम इससे obtain कर सकते हैं. So what is the technique of separation? When the homogeneous mixture of a solid and a liquid is heated in a distillation flask, the liquid forms the vapor. What is done? Homogeneous mixture यानी एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है सॉलिड और लिक्विड का. जब हम उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में हीट करते हैं तो जो लिक्विड है इस सॉल्यूशन में जो लिक्विड पोर्शन है वो वेपराइज हो जाता है. एंड द वेपर ऑफ द लिक्विड इज पास थ्रू अ कंडेंसर. कंडेंसर वो होता है जो वेपर को उसके लिक्विड फॉर्म में कूल होने के बाद चेंज करता है. तो जब हम इस वेपर को जो लिक्विड का वेपर है उसको हम कंडेंसर के थ्रू पास करते हैं देन इट गेट्स कूल्ड एंड कंडेंसेस टू फॉर्म द प्योर लिक्विड. एंड दिस प्योर लिक्विड कॉल्ड distillate is collected in a separate flask. The pure liquid which is obtained is known as distillate, okay, and it is then collected in a separate flask, and the solid in this distillation flask is left as it is. The examples of this distillation process could be pure water or distilled water can be obtained from tap water by the process of distillation. This distillation process is only used to purify the tap water. Tap water को distill करके हम उसको pure water में change करते हैं ताकि वो drinking के लिए use हो सके. Now the next topic is separation of liquid-liquid mixture. Now how can two liquids in a mixture can be separated? A mixture of liquid can be two types, miscible and immiscible. Now what is miscible and immiscible? First is miscible. Liquids that mix with each other in all proportions and form a homogeneous mixture are called miscible liquids. What are miscible liquids? जो completely दो लिक्विड्स जो आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं किसी भी प्रपोर्शन में और एक होमोजीनियस यानी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म कर लें उसको मिक्सेबल लिक्विड कहते हैं. फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर. व्हेन अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स्ड दे फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. Next is immiscible liquid. Liquids that do not mix with each other and form separate layers are called immiscible liquid. This you can see in your home also. When you mix oil and water, दोनों का अलग अलग लेयर फॉर्म हो जाता है. सो दिस इज़ द immiscible liquid. Why? Because they do not mix with each other and they forms two separate layers of their own. Now how can you separate miscible liquids? Miscible liquids are separated by the process of fractional distillation. Already you read about distillation. Now fractional distillation को use करके हम miscible liquids को separate करते हैं. The separation of mixture of liquids by distillation is called fractional distillation. Distillation में क्या था? हम solid और liquid के solution को separate कर रहे थे, but यहाँ हम mixture of liquids को distillate कर रहे हैं, so it is fractional distillation. What is the principle behind? Fractional distillation works on the basis of difference in boiling points of the liquid. So ये दोनों liquids के boiling point की difference के ऊपर fractional distillation work करता है. The mixture, for example alcohol and water, is kept in a distillation flask and heated. The liquid with the lower boiling point, that is alcohol, evaporates first and gets condensed in the condenser and is collected in a flask. The liquid with the higher boiling point, that is water, remains in the distillation flask. What happens in fractional distillation? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दे रखा है अल्कोहल और वाटर. हम अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को जब हम हीट करते हैं तो वी नो कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो अल्कोहल पहले इवेपोरेट करेगा. जब वो पहले इवेपोरेट करेगा तो वाटर रह जाएगा नीचे. जब अल्कोहल इवेपोरेट करके कंडेंसर के थ्रू पास होगा तो वहाँ वो कंडेंस्ड होके अपना वापस से लिक्विड फॉर्म में दूसरे फ्लास्क में हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं. और जो लिक्विड है जो वाटर है वो एज इट इज़ डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा बिकॉज इट हैज़ द हायर बॉइलिंग पॉइंट. सो द एग्जाम्पल्स आर constituents of crude petroleum such as petrol, diesel and kerosene are separated by fractional distillation. जो क्रूड पेट्रोलियम है
उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइक पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है। इन सब को हम सेपरेट किस प्रोसेस से करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ हाउ आर इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेटेड? So they are separated using a separating funnel. Okay, this is very easy process. So what is the principle behind this? The method works when two liquids are immiscible. Immiscible मतलब दो अलग अलग सेपरेट लेयर्स में फॉर्म होती है वो लिक्विड्स. द हैवियर लिक्विड फॉर्म्स द लोअर लेयर एंड द लाइटर लिक्विड फॉर्म्स द अपर लेयर. जो दो लिक्विड्स हैं उनमें से जो भी हैवियर होगा वो नीचे लोअर लेयर पे होगा और जो लाइटर लिक्विड है वो अपर लेयर पे होगा. व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ सेपरेशन? द मिक्सचर, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर. यहाँ हम एग्जांपल में ऑयल और वाटर दे रहे हैं. दे आर प्लेस्ड इन अ सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल इज एन apparatus which is used for this. The mixture forms two clear layers after some time. The lighter liquid, that is the oil, forms the upper layer and the heavier liquid, that is water, forms the lower layer. Separating funnel में जब हम ऑयल और वाटर का मिक्सचर डालते हैं तो क्या होता है? ऑयल क्योंकि हल्का होता है वेट में, इसलिए वो अपर लेयर फॉर्म कर देता है, और वाटर इज़ द हेवियर वन, सो इट फॉर्म्स द लोअर लेयर इन द सेपरेटिंग funnel. When the stopper of the funnel is opened slowly, the heavier liquid, that is water, comes out first and is collected in a container. When the lower layer is transferred or drained out completely, the stopper of the funnel is closed. The lighter liquid, that is oil, remains in the separating funnel. So you can understand this with the help of this diagram. Okay, suppose this is your, यहाँ पे दो है, यहाँ एक ऑयल है और वाटर है, और ये एक सेपरेटिंग फनल है. यहाँ एक स्टॉपर होता है, ये हम बंद करके रखते हैं. जब हम इसमें डालते हैं ये मिक्सचर तो यहाँ वाटर क्योंकि हैवी होता है तो वो नीचे सेटल हो जाता है और ऑयल अपर सरफेस पे होता है. जब हम इस स्टॉपर को खोलेंगे तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये लिक्विड वाटर जो है ये ट्रेवल करके ये एक कंटेनर में आ जाएगा और सेपरेटिंग फनल में बचेगा क्या? केरोसिन. सो दैट इज़ हाउ these two constituents in a mixture are separated. Example: separation of oil and water, separation of petrol and water, separation of carbon tetrachloride and water. So these are the examples which you have to learn. So activity 3 में वही दे रखा है, केरोसिन और वाटर को हम कैसे सेपरेट करते हैं. तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड: केरोसिन, वाटर, सेपरेटिंग फनल, एक ट्राईपॉड स्टैंड एंड बीकर चाहिए. What we have to do: pour a mixture of kerosene and water in a separating funnel, then shake the mixture and let it stand for some time ताकि दोनों layers अलग अलग form हो जाए. What will be you observe? You can clearly see two layers, water at the bottom and kerosene on the top. Then carefully open the stopper of the funnel and allow the water to flow into a beaker. Then stop as soon as the layer of the kerosene reaches the stopper. So what is the observation? ऑब्जर्वेशन क्या है कि केरोसिन रिमेन्स इन द सेपरेटिंग फनल एंड वाटर इन द बीकर. तो कंक्लूजन क्या निकला कि ये मिक्सचर जो इमिसिबल है, इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. You go through this chapter and ask me if you have any doubts, and that is all for this video. Thank you.